Give reasons, explain. Number 11, national income estimates are not accurate in India. There is danger of double counting. Double counting is a big problem. हम बोलते हैं कि हम फिनिश गुड्स की वैल्यू लेंगे, लेकिन कई बार जो किसी के लिए फिनिश गुड्स होता है वो किसी के लिए रॉ मटेरियल भी होता है. एग्जाम्पल, ब्रेड लो. ब्रेड कंज्यूमर के लिए फिनिश गुड्स, लेकिन वही ब्रेड रेस्टोरेंट में यूज हो रही है टू मेक सैंडविच, तो फिर क्या होगा, वो तो उनके लिए रॉ मटेरियल हो गया. सो करेक्ट कैलकुलेशन, एक्यूरेट कैलकुलेशन इज calculating it is a very difficult task. There is danger of double counting by including the value of intermediate goods. National income considers value of final goods and services only. सिर्फ final goods and services हम कंसिडर करते हैं, लेकिन वो इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज लेने का रिस्क, इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज, रॉ मटेरियल की वैल्यू लेने का, सर्विसेज का रिस्क हमेशा रहता है. Many people are illiterate and ignorant, so they do not maintain proper accounts. Now, second thing, accounts maintains. So they are illiterate and ignorant और वो maintain हो नहीं पाता. People don't reveal exact income because of tax evasion. टैक्स इवेजन करते हैं तो फिर से प्रॉपर जो नेशनल इनकम है वो कैलकुलेट नहीं हो पाएगी, क्योंकि पीपल आर नॉट रिवीलिंग देयर इनकम. दे वांट टू इवेट टैक्स, उस पे टैक्स बचाना चाहते हैं. डेटा सोर्स आर नॉट एब्सोल्युटली रिलायबल. जो भी डेटा सोर्स है वो भी रिलायबल पूरा नहीं है. So data source is also not absolutely reliable. There is lack of training and efficiency in statistical staff. So statistical staff भी fully trained नहीं है, efficient नहीं है.